गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है अल्जाइमर्स ड्रग। सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो एक सेकंड ड्रग जो है वो इफ़ेक्टिव देखा गया है अल्जाइमर के डिसीज़ को टैकल करने के लिए। ड्रग का नाम है डोनानेमैब। इसमें देखा गया है कि जो कॉग्निटिव डिक्लाइन है वो लगभग 35% तक जो है उसमें स्लो डाउन देखने को मिला है अल्जाइमर के केस में। अब अल्जाइमर क्या होता है? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया है। डिमेंशिया मतलब लॉस ऑफ मेमोरी शुरू हो जाती है, लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में डिक्लाइन देखने को मिलता है। अब अल्जाइमर में इनिशियली तो माइल्ड मेमोरी लॉस होता है, बट धीरे धीरे वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि कॉन्वर्सेशन करना या कोई भी इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करना वो मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये उस पार्ट ऑफ द ब्रेन को टारगेट करता है जहाँ पर थॉट कंट्रोल होता है, मेमोरी होती है, लैंग्वेज जो है हमारी प्रोसेसिंग होती है। तो लोगों की जो है एबिलिटी को टू कैरी आउट डेली एक्टिविटीज़ उसको ये हैम्पर कर देता है। अब अल्जाइमर डिजीज़ लगभग 55 मिलियन पीपल को है वर्ल्ड वाइड, और हर साल लगभग 10 मिलियन न्यू केसेस आ जाते हैं। यंगर पीपल में होता है लेकिन कम देखने को मिला है। और एस्टिमेटेड अगर हम इंडिया में देखें तो एडल्ट्स जो 60 प्लस की पॉपुलेशन में है, 7.4% ऑफ पीपल जो है उनमें डिमेंशिया की प्रॉब्लम है। अब क्या पता है हमें अल्जाइमर्स डिसीज़ के बारे में? साइंटिस्ट को अभी तक कुछ फुली कंक्लूसिव नहीं पता है कि क्यों होता है ये अल्जाइमर, और कोई सिंगल कॉज भी नहीं है। लेकिन हाँ, अभी तक ये कहा जा रहा है कि एज एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है अल्जाइमर्स डिसीज़ के लिए। इसके लिए अभी तक कोई क्योर भी नहीं है। सिर्फ हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, वेल स्लीप, डायबिटीज़ का रिस्क को कम रखना, हार्ट डिसीज़ के रिस्क को कम रखना, सिर्फ इसी को ही जो है डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, मेरी लाइफ ऐप। एनवायरनमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने रिसेंटली मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन निकाली है ताकि यंग जनरेशन जो है उनकी पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जा सके क्लाइमेट चेंज को टैकल करने में। मेरी लाइफ ऐप जो है वो मिशन लाइफ के कंसेप्ट से इंस्पायर्ड है। बेसिकली हम एक आइडिया प्रमोट करना चाहते हैं कि वेस्टफुल कंजम्पशन की बजाय हम माइंडफुल यूटिलाइजेशन करें। ठीक है, तो इन्वायरमेंट को जाके हमारे नुकसान ना हो। अब जो है एक ये मेरी लाइफ ऐप एक ऐप जो है मार्केट प्लेस बन गई है, जिससे कि यंग लोग जो हैं वो क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी फोकस्ड अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर पाएंगे। ठीक है, अब मिशन लाइफ क्या है? लास्ट ईयर अक्टूबर में इसको जो है वो लॉन्च किया गया था गुजरात में। और इसका फोकस क्या है? बिहेवियर चेंज लेकर आना इंडिविजुअल्स में। इंडिया लेड एक ग्लोबल मास मूवमेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। और ये सस्टेनेबल गोल्स और क्लाइमेट एक्शंस को जो है वो इंडिविजुअल लेवल तक लेकर जाना चाहती है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, जेनरिक ड्रग। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक वार्निंग इशू की है डॉक्टर्स के लिए, गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स और CGHS वेलनेस सेंटर्स में, कि उन्हें जो है वो जेनरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है। जेनरिक ड्रग्स क्या होते हैं? सेम उनका एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जैसे कि एक आपकी ब्रांडेड ड्रग का होता है। सेम उसका थेरापेटिक इफेक्ट भी होता है, डोज भी सेम होती है, सेफ्टी, स्ट्रेंथ, क्वालिटी सब कुछ सेम होता है। लेकिन जो कुछ इनएक्टिव जो है इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो शायद डिफरेंट हो सकते हैं, वो आपकी बॉडी पर इन एनी वे जो है वो इम्पैक्ट भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो किसी भी पेटेंटेड ड्रग का जो है ये जेनरिक ड्रग बनाया जाता है, लेकिन उसको तब तक मार्केट नहीं किया जा सकता जब तक पेटेंटेड ड्रग मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, जैसे ही पेटेंट ख़त्म होता है तो ये जेनरिक ड्रग को मार्केट भी किया जा सकता है। ये जेनरिक ड्रग्स जो हैं वो बहुत ही सस्ते होते हैं एज़ कम्पेयर टू देयर ब्रांड नेम ड्रग्स। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, यूनिक इकोनॉमिक ऑफेंडर कोड। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि एक न्यू मैकेनिज्म लेकर आएंगे जिससे कि कंपनीज और इंडिविजुअल्स जो कि इकोनॉमिक ऑफेंसेस के लिए अक्यूज्ड हैं उनको एक यूनिक कोड असाइन कर दिया जाएगा। एक अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होगा ये, सिस्टम जनरेटेड। एक बार पुलिस या सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने ये डेटा भेज दिया नेशनल इकोनॉमिक ऑफेंस रिकॉर्ड्स को, तो एक स्पेसिफिक जो है एक कोड जनरेट होगा जो कि उन इंडिविजुअल के केस में आधार नंबर से लिंक होगा और कंपनी के केस में पैन से लिंक हो जाएगा। इससे होगा क्या कि जितनी भी एजेंसीज़ हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पर भी हों चाहे सेंट्रल लेवल पर हों, उनको चार्जशीट की वेट नहीं करनी पड़ेगी। वो इस कोड के थ्रू ही जो है सारा 360 डिग्री प्रोफाइल जो है उस पर्टिकुलर इकोनॉमिक ऑफेंडर का जो है वो और उनका सारा रिकॉर्ड जो है वो एक्सेस कर पाएंगे।
अब नेशनल इकोनॉमिक ऑफेंस रिकॉर्ड्स क्या है, एक सेंट्रल रिपोजिटरी है सारे इकोनॉमिक ऑफेंसेस की। सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो को जो है टास्क मिला हुआ है कि वो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे, सारी सेंट्रल एजेंसीज, स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसीज और इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलकर। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं WPI इन्फ्लेशन, इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। WPI इन्फ्लेशन होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है इन्फ्लेशन जुलाई 2020 के बाद पहली बार जो है वो नेगेटिव जो है वो ट्राजेक्ट्री में पुश हो गई है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के डेटा के मुताबिक -0.92% जो है WPI इन्फ्लेशन पहुंच चुकी है। ये एक हाई बेस इफेक्ट की वजह से हो रहा है, क्योंकि देखने को क्या मिला है कि पिछले कुछ जो है टाइम से हाई इन्फ्लेशन चल रही थी इकोनॉमी में, लेकिन अब ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस इंक्लूडिंग फूड, फ्यूल और अदर इनपुट कॉस्ट ये कम होने लग गई हैं। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बेसिक मेटल्स, फूड प्रोडक्ट्स, मिनरल ऑयल्स के प्राइसेस कम हुए हैं, और उसकी वजह से हमको ये WPI जो है वो माइनस में देखने को मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस हमारे 2 ईयर्स। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स होता क्या है, तो ये प्राइस ऑफ गुड्स एट होल स्टेज होता है, मतलब कि जब गुड्स या जो है बल्क में सेल किए जाते हैं उस स्टेज पे जो प्राइस है उसको ट्रैक करता है ये इंडेक्स। और इसमें 697 आइटम्स होती हैं। इनका करंटली अभी बेस ईयर जो फॉलो किया जा रहा है वो है 2011 और 12, और ये इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए इंडिया में यूज़ किया जाता है। अब बेस ईयर क्या होता है, बेस ईयर हमारे WPI और CPI दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। तो बेस ईयर मतलब बेसिक आप एक कंपैरिजन ले रहे हो 2011-12 के कंपैरिजन के हिसाब से इस साल जो है वो हमारी कितनी इन्फ्लेशन या इस पर्टिकुलर टाइम पर हमारी कितनी इन्फ्लेशन चल रही है। अगर आप बेस ही नहीं लोगे तो आप कंपैरिजन कैसे करोगे, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यूएस ने रिसेंटली प्रपोज किया है कि एडवांस नोटिस दिए जाएं टैरिफ चेंजेस या एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस के लिए IPEF मेंबर स्टेट्स के बीच में। तो ये IPEF जो है यूएस प्रेसिडेंट ने मई 2022 में लॉन्च किया था। 14 मेंबर स्टेट्स इंक्लूडिंग इंडिया इसके जो है वो ऑफ कोर्स मेंबर्स हैं, और इसमें जो है सस्टेनेबिलिटी, रेजिलियंस, इंक्लूसिवनेस, इकोनॉमिक ग्रोथ, फेयरनेस, कंपेटिटिवनेस जो है मेंबर इकोनॉमीज़ के बीच में एडवांस करने के लिए ये एक फ्रेमवर्क निकाला गया है, खासकर वो इकोनॉमीज़ जो इंडो पैसिफिक रीजन में आती हैं। इसमें टेंजिबल बेनिफिट्स जो हैं वो इंश्योर करने का जो है ये इनिशिएटिव है कि ताकि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट बूस्ट हो सके, ठीक है। तो ये सिर्फ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, ये बेसिकली आपके सप्लाई चेन, क्लीन एनर्जी, डीकार्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्स, एंटी करप्शन, ये सारे इश्यूज़ को आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए कवर किया गया है इसमें। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं INS दिल्ली एंड INS सतपुरा, सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेवल शिप्स INS दिल्ली और INS सतपुरा रिसेंटली कंबोडिया से डिपार्ट हो चुके हैं, क्योंकि इंडियन नेवी की जो है डिप्लॉयमेंट थी एशियन कंट्रीज़ में। INS दिल्ली जो है वो इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। माजागांव डॉक लिमिटेड जो है मुंबई में इसको बनाया गया है 1997 में। ऐसे ही INS सतपुरा भी इंडिजिनसली डिज़ाइन बिल्ट शिवालिक क्लास फ्रिगेट है। ये भी एक फ्रंट लाइन यूनिट है ईस्टर्न फ्लीट का, विशाखापट्टनम बेस्ड। इसको भी जो है वो माजगांव डॉक्स लिमिटेड ने 2011 में बनाया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आईडेक्स, ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस जो है उन्होंने एक माइलस्टोन अचीव किया है, 250th कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किया है, और ये पहला कॉन्ट्रैक्ट है जो मिशन डेफ स्पेस में साइन किया गया है। अब आईडेक्स क्या है, आईडेक्स एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है डिफेंस मिनिस्ट्री का, 2018 में इसको लॉन्च किया गया था सेल्फ रिलायंस और इनोवेशन को फॉस्टर करने के लिए। और डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज इंक्लूडिंग MSME, स्टार्टअप्स, इंडिविजुअल इनोवेशंस, R&D इंस्टीट्यूट्स और अकेडमिया को एंगेज करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। इसमें जो है डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फंड्स भी प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है स्टार्टअप्स, MSMEs या इंडिविजुअल इनोवेटर्स को, कि वो जो पर्टिकुलर चैलेंजेस हैं डिफेंस इंडस्ट्री में जो इंडियन डिफेंस गवर्नमेंट को हमारे को चाहिए होते हैं, उससे रिलेटेड जो है सॉल्यूशंस देने के लिए जो है इवन फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाता है प्राइवेट इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स, MSMEs को, ठीक है। ऐसे ही मिशन डेफ स्पेस क्या है, प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था 2022 में, और ये आत्मनिर्भर भारत का एक जो है कॉम्प्लीमेंट करता हुआ मिशन है। और हम डिफेंस टेक्नोलॉजीज जो स्पेस डोमेन में है
उसको जो है वो इनिशिएट करना चाहते हैं। तो 75 डिफेंस स्पेस चैलेंजेस दिए गए हैं और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करने को जो है वो चैलेंज दिया गया है डिफेंस एप्लीकेशंस द्वारा। स्टार्टअप्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स कुछ भी हो सकते हैं, और वो इन डिफेंस स्पेस चैलेंजेस जो है, जैसे कि लॉन्च सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम, कम्युनिकेशन पेलोड सिस्टम, ग्राउंड सिस्टम, सॉफ्टवेयर सिस्टम, इससे रिलेटेड चैलेंजेस को जो है वो अगर सॉल्व करते हैं तो उनको ऑफ कोर्स इसके लिए जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाता है। So now let us see all these topics in English. So the first topic is Alzheimer's drug. This topic is important for your social issues. So within 1 year, a second drug has been found effective in checking the cognitive decline in patients with Alzheimer's, early Alzheimer's especially. So donanemab is the name of this drug, and it has found to be slowing down the cognitive decline by almost 35% when compared with placebo, of course. So, what is Alzheimer's disease? It is the most common type of dementia. Dementia basically means loss of memory, language, problem solving, and other cognitive abilities. And uh, Alzheimer's starts initially with mild memory loss, but it can lead to even substantial decline in the ability to carry on a conversation and even respond to the environment. Alzheimer's disease involves parts of the brain which control thought, memory, and language, and it can seriously affect a person's ability to carry out daily activities. So, what is the extent of prevalence of this disease? So, about 55 million people have dementia worldwide. Every year, about 10 million new cases are found, and generally, younger people are not at risk, but of course, it is less common, but it can be there. Okay, so in India, in the senior citizens or in the adult stages of 60 plus age, about 7.4% of people are suffering from it. We do not currently know why Alzheimer happens. There is not a single cause also, but um, there is a larger agreement that age is a known risk factor for Alzheimer's disease. So, what is the treatment for it? Currently, there is no cure, and the doctor only prescribes a healthy diet, exercising regularly, sleeping well, reducing the risk of diabetes and heart diseases as a preventive measure. So the next topic is Mary Life app. This topic is important for your environment section. Government has recently launched the Mary Life app, and this will encourage participation of young people in tackling climate change. So this is inspired by the concept of Mission Life, and we want to promote the idea of mindful utilization instead of wasteful consumption. So this application will foster nationwide movement for life, and it will allow young people to explore their interest in finding climate change and environment sustainability for focused opportunities. So what is Mission Life? So it was launched in October 2022 in Gujarat, and the aim of this mission is to bring about behavior changes in individuals. So this is an India-led global mass movement, which is under functioning under the Ministry of Environment, and the aim is to showcase that sustainable goals and climate actions can be taken up by individuals also. Okay, so the next topic is generic drug. This topic is important for your economics section. So central government has recently issued a warning to doctors who are working at the government-run hospitals and CGHS wellness centers that they should be prescribing the uh, generic medicines. So generic medicines are basically the same medicines as that of any brand name drug. They have the exact same active ingredient, and they also yield the same therapeutic effect. They have the same dose, safety, strength, quality, but of course sometimes the inactive ingredient could be different. In any way, it is not going to make any impact on your body, because of course that as long as the active ingredient is same. So they demonstrate bioequivalence, these branded drugs and generic drugs, and they have the same risk and benefits also. But generic drug, because it is not patented, so it cannot be marketed after the brand name drugs patent, until the name drugs patent has expired, and they are generally very inexpensive as compared to the brand name drugs. So the next topic is unique economic offender code. This topic is important for your governance section. So government is planning to introduce a new mechanism whereby companies and individuals who are accused of economic offenses will be assigned a unique code.
So this will be an alphanumeric code which will be system generated. Once the police or a central investigative agency sends the data to National Economic Offence Records, this code would be generated, which would be specific to each offender. And in case of individuals, they would be this code will be linked to their Aadhaar number, and in case of a company, it would be linked to their PAN number. So this would allow the multi-agency probes, and authorities would not have to wait on charge sheets to be filed. Instead, they would have this 360-degree economic profile of the offender, and they would be getting all the information using just this alphanumeric code. So, what is National Economic Offence Records? This is a central repository of all economic offences, and this would be made available with all central state intelligence agencies and enforcement agencies. So, Central Economic Intelligence Bureau has been given the task of coordinating and completing this project. And once completed, this would give access to all the agencies, the data of economic offences and economic offenders. So the next topic is WPI inflation. This topic is important for the economy section. So WPI inflation has fallen into negative trajectory for the first time since July 2020. So as per the Ministry of Commerce and Industry data, WPI wholesale price index has fallen to a 3-year low of minus 0.92%. This is happening because of a high base effect, as we have seen that in the last 2 or 3 years, and there was high inflation, and now the global commodity prices have moderated, and the fall in prices of basic metals, food products, mineral oils, food, fuel, and other input costs have contributed to this change. So, what is wholesale price index? It is basically WPI basically represents the prices of goods at the whole stage, which is the stage where the goods are sold in bulk. So it covers a total of about 697 items, and currently India follows the 2011-2012 base year for WPI measurement, and WPI is of course an important measure for inflation in India. So what is a base year? So base year is basically used to make comparison. Otherwise, how would you compare that there is this inflation is this much percent in this particular quarter or month or year? So for that in WPI especially, we are using 2011 and 12 as the base year. So the next topic is Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity. This topic is important for your international relations. The US has recently proposed that advance notices of tariff changes and export restrictions must be considered by the 14 member nations of IPEF. So IPEF is an economic initiative particularly, which was launched by the US President in May 2022, and it consists of 14 member states including India. Remember that India has not signed all the components of IPEF, and we have selectively chosen the best ones which are suitable for us. So this framework is intended to advance resilience, sustainability, inclusiveness, growth, fairness, and competitiveness, and it is not just a free trade agreement between the member states, but it goes beyond to work on the issues of supply chain, clean energy, decarbonization, infrastructure, tax, anti-corruption. So basically, we want to give tangible benefits which are fueling economic activity and investment in the between the member states. So the next topic is INS Delhi and INS Satpura. This topic is important for your security section. So Indian naval ships INS Delhi and INS Satpura have recently departed Sehang Nukwale of Cambodia, because these ships were making a port call in the country as part of the Indian Navy's deployment to Asian countries. INS Delhi is the first indigenously built guided missile destroyer, which was built by Mazagon Dock Limited in Mumbai in 1997. INS Satpura is an indigenously designed and built Shivalik class uh, guided missile stealth frigate, and it is a frontline unit of the Eastern Fleet based at Vishakhapatnam, and it has been built at Mazagon Docks Limited of Mumbai. So the next topic is IDEX. So this topic is important again for your security section. So innovations for defense excellence have reached a milestone with the signing of 250th contract, and this is the first one under the mission DEF space. So IDEX is basically a flagship initiative of Ministry of Defense, which was launched in 2018,
We want to achieve self-reliance and foster innovation in our defense industry. So for that, technology development in defense and aerospace uh, has to be ensured by engaging with industries including MSME, startups, individual innovators, R&D and institutes and academia. So IDEX is being funded by Defense Innovation Organization, which is a not-for-profit company. So financial support is given to those startups, MSMEs, individual innovators, and partner incubators who are helping in addressing the challenges in the defense industry. So, what is Mission Def Space? So, was launched by PM Modi during Def Expo in October 2022, and the goal of this mission is to make India Atmanirbhar in defense technologies in the space domain. And this aims to encourage technology development in space for defense applications by these startups and young entrepreneurs through specific 75 defense space challenges. So these could be classified in several buckets like launch system, satellite system, communication payload system, ground system, software system. So basically these companies or startups who are providing solutions to these challenges in the space domain, they are given financial support, and the first contract under this mission dev space has been recently signed. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.